everyone, and welcome back to the new video of this channel. So today we will be solving a problem which is freedom trails LeetCode 5.4 problem. So you can see here it has marked as a hard problem, but I will say it's a very easy or easy to medium level problem. So I will tell you why I am saying like it is a easy problem. So let's see the problem. So problem is say that in the video game Fallout 4, the quest Road to Freedom requires players to reach a meter dial called as meter freedom trail ring and use of the dial. Let's directly see the example. Actually, there are much theory, so let's directly see the example. So you can see this. We have given the two, एक ring string दे रखी है, एक key string दे रखी है. We have to make this key string by using the ring string. Like you can see the these 2 points. Like you can rotate the ring clockwise or anti-clockwise one place, which counts as one step. The final purpose of the rotation is around assign the ring characters at the 12 of direction. Let's see. So you can see here, this is my ring. Godding. Godding is my ring and key is GD. Now let's see. You can see the explanation for the first key character G. Since it is already in place, G तो पहले से ही पड़ा हुआ है, G तो आगे आगे पड़ा हुआ है. So we just need to one step to spell this character. मतलब एक स्टेप देना पड़ेगा स्पेल करने के लिए उसको, ठीक है. फॉर द सेकंड की क्या होगी D. तो D को मतलब D मेरे पास फ्रंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कैरेक्टर G O को पीछे भेजना पड़ेगा. तो फॉर द सेकंड की कैरेक्टर D we need to rotate the ring godding anti-clockwise by 2 steps to make it become DDINGGO. Now we have rotated 2 times of the string godding. So now D is in the front of the string. So DDINGGO. So मैंने 2 स्टेप्स इसमें चला क्योंकि मेरे को तो D अब मैंने स्पेल कर चुका हूँ, ठीक है. मतलब डी को फ्रंट में ला चुका हूँ, बट अब इसको स्पेल करने के लिए डी को स्पेल करने के स्पेल भी तो करना पड़ेगा ना. स्पेल करने के लिए एक स्टेप चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 1 + 2 + 1, 4 स्टेप्स विल बी देयर. लाइक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले जी को देखना है, जी फ्रंट में पड़ा हुआ है तो डायरेक्टली स्पेल कर देंगे. स्पेल करने के लिए एक स्टेप, ठीक है. नाउ डी है, डी फ्रंट में नहीं पड़ा हुआ तो मेरे को 2 कैरेक्टर्स आ गए, 2 कैरेक्टर्स को पीछे भेज देंगे. 2 कैरेक्टर्स को पीछे भेज दिया, 2 स्टेप्स, और एक इसको स्पेल करने के लिए डी को. तो 3 स्टेप्स इसमें हो गए और एक स्टेप में होगा, तो 4 स्टेप विल बी देयर. And you can see this example also, you can try run it and the answer will be 30. So now let's see the approach part, like how we will do this and what data structure we will use here. So you can see here there are multiple choice, like G पे D पर पहुंचने के लिए, like finally की तो भी GD है. Now we have to go from G to D. तो G से D पहुंचने के लिए मेरे पास मल्टीपल चॉइस है. G से ये वाला D भी पहुंच सकता हूँ, G से ये वाला D भी पहुंच सकता हूँ, और इस G से ये D भी पहुंच सकता हूँ, इस G से ये भी D भी पहुंच सकता हूँ. बट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स. Here you can see where is the yeah, return the minimum number of steps to spell the all other characters in the keeper. So you can see here we have multiple steps, so we can use recursion here, because recursion कहता है कि यार अगर तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइसेस है तो तुम उस केस में रिकर्जन यूज कर सकते हो. एंड फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पर्पस वी विल यूज डीपी इफ इट इज पॉसिबल. डीपी कब यूज करते हैं, जब सेम नंबर ऑफ केसेज आ जाते हैं, रिपीटेशन आ जाती है, तब डीपी यूज करते हैं, ठीक है. अब जी से डी तक पहुंचने के लिए मेरे पास ये भी एक बे है, ये भी एक बे है, जी से डी पर ये भी एक बे है, ये भी एक बे है, पर वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स. सो लेट्स सी. इस जी से इस डी पर पहुंचने के लिए हमको मिनिमम नंबर स्टेप चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो इस जी से इस डी पर पहुंचने के लिए 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, ठीक है. एंड डी से जी तक 1 स्टेप एंड 2 स्टेप. एंड ऑल्सो इट कैन बी पॉसिबल, लाइक अगर जी यहाँ पे हुआ, जी यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता है, ठीक है. ये पॉसिबल नहीं है कि क्लॉकवाइज ही चले, ये एंटी क्लॉकवाइज ही चल सकता है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, बट हमें तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए. So now let's directly do the code, and I'll explain you from the code also. So what we will do is we will create 2 pointers, like एक pointer तो रिंग के लिए लगाएंगे जैसे GODDING, एक pointer की के लिए लगाएंगे. So int
I can say pointer का you can say like pointer equals to 0. ये pointer किसके लिए, मैं लिख देता हूँ रिंग के लिए, for the ring, ठीक है। और एक पॉइंटर लेते हैं int index equals to 0, this will be for the की। अब दोनों 0 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इनका साइज भी डिफाइन कर देता हूँ, int n equals to ring dot size and int m equals to key dot size. So now I have defined the size of the particular strings. Now I have to make a function, like I am creating a function in return solve. In this function I will pass ring, comma, key, comma, pointer, comma, index, ठीक है। ये चारों मैंने पास कर दिए। नाउ लेट्स क्रिएट द फंक्शन इन सॉल्व। इन फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूंगा, ये दोनों स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इन स्ट्रिंग को मैं बाय रेफरेंस पास करूंगा, ठीक है। फर्स्टली आई एम राइटिंग द रिकर्जन सॉल्यूशन, देन आई विल टेल यू व्हाई इट इज गिविंग मी टीएलई, है ना। देन वी विल अप्लाई अ डीपी। सो इंट पॉइंटर, कॉमा, इंट index. So you know that key, if we are writing the solution using recursion, so firstly we have to write the base case. So base case will be very simple, like if firstly I have to create define the size also. So int n equals to ring dot size and int m equals to we can say key dot size, ठीक है। I have defined the size of the ring and the key. नाउ आई हैव टू चेक लाइक इफ माई एन है जो, ठीक है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो की पर मेरा इंडेक्स है, की को ट्रैक कौन कर रहा है, मेरा की वाली को। अगर मैं इंडेक्स ट्रैक कर रहा है, क्योंकि की को तो इंडेक्स ट्रैक कर रहा है। अब इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो की का साइज है एम हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि भाई एक चीज देखो, इनिशियली इंडेक्स यहाँ पे था जी पर, फिर इंडेक्स डी पर आएगा, फिर इसके आगे इंडेक्स जा नहीं सकता। तो इसके इसमें क्या कर देंगे, रिटर्न 0। अगर मेरा बाहर चला जाए, इंडेक्स ग्रेटर देन एम हो जाए, तो उस केस में मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। नाउ यू कैन सी है वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। सो आई एम टेकिंग लाइक इंट रिजल्ट that, or we can say step equals to int max, इनिशियली मैक्सिमम पे है, ठीक है। Now what I'll do is I'll apply a loop here for int I equals to 0 to I less than n and I plus 1. You can see here n is showing the ring dot size. So मैं एक उसको जो रिंग है उसको ट्रेवर्स करता जा रहा हूँ, ठीक है। एक लूप के जरिए से एक बार ट्रेवर्स करता जा रहा हूँ। नाउ आई विल चेक लाइक मेरा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप चाहिए, तो स्टेप इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ स्टेप, कॉमा। अब मेरा मिनिमम नंबर ऑफ इन दोनों पे, जैसे एक एंटी क्लॉक वाइज से आएगा, एक क्लॉक वाइज से आएगा। अगर मेरा क्लॉक वाइज से आता है, यहाँ से जी से डी पर गए, तो सिंपली व्हाट वी आर डूइंग इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो मेरा आई माइनस पॉइंटर है, क्योंकि पॉइंटर इज शोइंग द रिंग, बेसिकली पॉइंटर रिंग को शो कर रहा है। सो आई माइनस पॉइंटर विल शो द डिस्टेंस, लाइक जी से डी पर गए तो 1 and 2, आई माइनस पॉइंटर विल शो द डिस्टेंस। और इट कैन बी लाइक minimum number of absolute value of I minus pointer, or it can be n minus absolute value of I minus pointer. It is for n minus absolute value of I minus pointer is for anti-clockwise. Absolute value of I minus pointer is for clockwise and this is for anti-clockwise. Whichever will give me the minimum answer, that will be my answer. So इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे, ठीक है, या इन दोनों का मिनिमम ले लिया एंड फिर प्लस कर देंगे बाकी सॉल्व फंक्शन को। इन सॉल्व फंक्शन व्हाट आई विल पास, सिंपली रिंग, कॉमा, की, कॉमा। अब मेरा क्या हुआ, पॉइंटर हो गया। पॉइंटर क्या है, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। इनिशियली पॉइंटर यहाँ पे था, क्योंकि पॉइंटर तो रिंग को शो कर रहा है। इनिशियली पॉइंटर यहाँ पे था, अब पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आई पर आ जाएगा। और इंडेक्स को सिंपली +1 कर देंगे, क्योंकि फर्स्टली मैंने जी को ट्रेवर्स कर दिया, जी को देख लिया, अब मेरे को डी को देखना है, तो इंडेक्स +1 हो जाएगा। सो या
Yeah. So this was the code, and finally what I can do is I can simply return my step. So now let's run and see if this will work or not. Then finally we will do the DP solution. It will give me the time TLE. So what is the problem here? So now let's see what is the problem here. Int max and minimum number of these two elements, like yeah, if I increase by one, yeah, okay. So there was a problem. Yeah. So I have updated this condition like a separate condition लिखी क्योंकि एक ही condition में दिक्कत हो जा रही, ठीक है. And before going through this condition, I have to write a condition like if ring of I equals to index of I, if the character is same, like you can see here, एक minute, या यू कैन सी हियर, अगर मेरा कैरेक्टर सेम होगा रिंग ऑफ आई, मान लो रिंग ऑफ आई इनिशियली जी पर है और इंडेक्स ऑफ आई जीरो पर है, इस पर है जी पर, और दोनों अगर इक्वल होंगे, जी और जी इक्वल होंगे, तभी ये कंडीशन यूज करनी है. सो वी हैव टू यूज दिस कंडीशन इन सच अ वे लाइक if these two are equal, then we have to use this condition. Now let's run and see if this will work or not. So it is giving me compile error. Actually this should be if ring of I equals to ओ, ये सॉरी की का इंडेक्स होना चाहिए था, की का इंडेक्स, ठीक है. सो अगर ये रिंग ऑफ आई इक्वल टू की का इंडेक्स हो जाता है, तब मेरे पास ये कंडीशन चलनी चाहिए, ठीक है. इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड. So now let's submit and see if this will work out. It will definitely give me a TLE. Let's see. Yeah, it is giving me a TLE. Why it is giving me TLE? Because there are many cases that are repeating. सो यहाँ पर रिपीटेशन पॉसिबल है, रिपीटेशन पॉसिबल है, और कंस्ट्रेंट देखो आप, एन अप टू 100 जा रहा है, पर यहाँ पर रिपीटेशन पॉसिबल है. सो दैट्स वाई फॉर ऑप्टिमाइजेशन पर्पस आई विल यूज डीपी हेयर. So for creating a DP, it is very simple to create DP. I have to create a 2D DP here. I'll tell you about why I am creating 2D DP of vector into 2D DP of size n plus 1, comma minus 1. ठीक है, यहाँ मैंने 2D DP क्रिएट कर ली है. ये सॉरी एन प्लस वन होना चाहिए था, ठीक है. मैंने दोनों एन प्लस वन साइज की 2D DP क्रिएट कर लिया, और जो कि मैंने -1 से क्रिएट कर दी है, ठीक है. और इस 2D DP को मैं पास कर देता हूँ. नाउ आई विल टेल यू अबाउट कि why we are using 2D DP here. Because you can see here, we are in solve function, we are only taking care of pointer and index. These two are changing again and again. Pointer change हो रहा है, index change हो रहा है. So that's why we are using 2D DP here, because two pointers are changing here. So now I'll pass DP here, int %DP. So ठीक है, 2D DP पास करनी. if I have to write a condition if DP of pointer and index not equals to -1. In that case, I can return DP of pointer of index. ठीक है, and finally our answer will be like return DP of pointer of index equals to step. So now let's run and see if this will work or not. So it is giving me some error like हाँ, फॉल फंक्शन में मेरे को पास भी करना पड़ेगा ना यहाँ पे भी DP है. So now let's again run this. Again it is giving me some error. Okay. Oh, रिंग किसको शो कर रही है? पॉइंटर और इंडेक्स. पॉइंटर का साइज कितना है? एन, ठीक है.
Now I think it will work perfect. क्या दिक्कत आ गई? n+1 को vector into. What is the problem here? This is function style है काश चलो. Okay, so okay. So now I think it will work perfect. So now let's run and see if this will work or not. You can see it is working perfect. Now let's directly submit this and see if this will work on it. Now definitely it will work because it's a DP solution and optimized solution here. You can see here it is taking 10 millisecond time and better than 18.80.16. It depends on the server also. So this was the optimized solution, and for further optimization you can use, mm, you can optimize it, the space complexity. Here we are taking space vector space 2D vector we are using, so that's why we are taking space here. If it is possible to create without using big of one space, so without using any space, so that is also possible. So you can try it, but it is a optimized solution, well famous solution. So this was the code, and if you find this solution, please like, share, and subscribe to click.